Good morning students. Today we are going to start lecture 2 of chapter 7 for class 11th CBSE and RBSE both. देखिए, in previous lecture we have discussed about the chemical equilibrium कि equilibrium क्या होता है. तो आपको मैंने बताया था कि जो equilibrium है उन reactions में पाया जाता है which proceed in both direction. Forward direction में भी reaction हो रही है और backward में भी हो रही है. तो दोनों direction में भी reaction होती है तो वहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप होता है. तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट दैट केस. इसका एक कंडीशन है डायनामिक इक्विलिब्रियम. तब ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन इज स्टॉप, बट वो स्टॉप नहीं होती. उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, एंड एट द इक्विलिब्रियम देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस टाइम पर. ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट इज के सी एंड व्हाट इज के पी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, K is equilibrium constant. If we are taking concentration, then equilibrium constant, chemical equilibrium constant at concentration, and it is at pressure. Okay. Now come to the relation. The relation between Kp and Kc. ठीक है. अब आप देखो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc कैसे है. जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, इट इज गोइंग ऑन दिस Cc प्लस Gd. ओके, सो इन दिस रिएक्शन वी नो दैट Pv इक्वल्स टू nRT. सो वी कैन राइट P इक्वल्स टू nRT अपॉन V. ओके, एंड व्हाट इज दिस? This is the concentration because N upon V is the number of moles per liter volume, that is called concentration RT. ये आपके पास फॉर्मूला आ गया. ओके, तो PA क्या होगा? PA होगा A की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन RT. PB क्या होगा? B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन RT. C क्या होगा? C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन RT. एंड D क्या होगा? D की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन RT. ओके, क्लियर? तो व्हाट विल बी Kp? Kp यदि हमें लिखना है तो मैंने आपको कल बताया था कैसे लिखोगे. Pc, ये कैपिटल सी है नीचे, कि कितने मोल्स है, अपॉन Pd कि कितने मोल्स है, अपॉन Pa कि कितने मोल्स है, अपॉन Pb कि कितने मोल्स है. क्लियर? अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यूज इन अबव रिएक्शन. तो Kp क्या हो जाएगा? इट विल बी CRT, ये हो जाएगा DRT. ओके, ये हो जाएगा ART अपॉन BRT. क्लियर? PC के ऊपर C पावर है, इसके ऊपर D पावर है, इसके ऊपर A पावर है, इसके ऊपर B पावर है. ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस Cc अपॉन Dd RT C प्लस T अपॉन कैपिटल D, सॉरी A, it is A and it is B. Clear? A plus B. तो
ये जो चीज है ये क्या है, ये C है, सॉरी ये KC है, क्या है ये KC है, एंड RT क्या हो गया, RT विल बी C प्लस T माइनस A प्लस B। तो जो रिलेशन आपके पास निकल के आया, व्हाट इज KP इक्वल्स टू KC RT डेल्टा N, where delta N is the NP minus NR, number of moles of product minus number of moles of reactant. Okay, clear? So this is the relation actually. So what is the relation between Kp Kc? Kp is equal to Kc RT delta N. For example, if a reaction is like H2 plus I2 is equal to 2HI. Okay, then what will be Kp Kc relation? Kp Kc, if this is gas, and this is gas, then Kp Kc RT delta N. Delta N is number of mole of products. The number of mole of products is 2. 2 minus 2. That is equals to Kc RT 0. RT 0 equals to 1. Okay, so relation is Kp is equal to Kc in this case. But if the reaction is like, another example is like N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. Right? N2 is gas, H2 is gas, and ammonia is gas. So what will be Kp? Kp will be Kc RT delta N. 2 minus 4, that is equals to Kc RT minus 2, that is Kp is equal to Kc RT 2. That is the relation. Okay, so clear? Now come to the we can say calculation of Kp. Now second point is calculation of Kp. Clear? Calculation of Kp means how to calculate Kp. Okay? For example, if H2 plus I2 is equal to 2HI. Okay? H2 is gas, I2 is gas, and HI is also gas. Okay? Initially it is 1. It is 1 mole and it is 0. In this reaction, first reactant are present. Initially reactants are 1 mole and there is no product. After some time these reactants converted into product and product form, and after some time this product act as a reactant and form product. So at initially concentration of reactants is 1. At time t X mole is dissociated. X mole of H2 is converted into product. So how much is remaining? It remaining 1 minus X. And B is also remaining 1 minus X. So how many product will form? It will form 2X. Okay? Clear? So the total number of moles
moles. How many total number of moles at equilibrium? At equilibrium कितने हो जाएंगे? 1 minus x plus 1 minus x plus 2x, that is equals to 2. Okay, minus 2x will cancel out with plus 2x, so total number of moles at equilibrium is 2. So we know that what is Kp? Kp is phi, pressure of Hi, upon pressure of H2 upon pressure of I2. We know this. So what will be phi square? What is this? This is phi is 2x upon 2 into p a whole square upon 1 minus x upon 2 p and 1 minus x upon 2 p. Okay, it is the, what is this? This p, it is a partial pressure, we can say partial pressure. And what is partial pressure? Partial pressure means, partial pressure is total number of moles of that constituent at equilibrium upon total moles into P. So solve this. So it will be 4x square upon 4 P square and 1 minus x का whole square into 4 into P square. So 4 से 4 cancel out, P square से P square cancel out. So what we will get? We will get 4x square upon 1 minus x का whole square Kp. So it is the calculation of Kp. Clear? So it is Kp in terms of x. X is the degree of dissociation. Degree of dissociation. Degree of dissociation means if H2 or I2 or the reactant will not dissociate, it will not form product. But if we have to calculate Kc, for example, if we have to calculate Kc, then in this reaction, what will happen? Again, calculation of Kp, okay, and here calculation of Kc. Kc क्या होगा? Starting में it is 1, it is 1, it is 0. At time t, x is dissociated, so remaining at time t remaining कितना है? 1 minus x, 1 minus into 2x. Okay. So Kc will be Hi की concentration 2 upon H2 upon I2. And what is the concentration of Hi? Concentration क्या होती है? We know that concentration is number of moles present in volume of solution. Okay. So Hi कितना है? 2x upon V. ये कितना है? 1 minus x upon V. If whole reaction is going in V container, it is a volume container, volume of container. Okay, and again it is 1 minus x upon V. It is Kc. So Kc will be 4x square V square into V square upon 1 minus x का whole square. So V square से V square cancel out. So what we will get? 4x square upon 1 minus x का whole square. It is Kc. So Kc and Kp is the same in this reaction. Why? Because in this reaction we know what? We know that for this reaction we know that Kp बराबर Kc RT delta N.
what is the relation between Kp, Kc? RT is 0, that is equals to C. So Kp and Kc is equal in this gaseous reaction. Okay, so you will write this, understand and try to solve questions. Thank you.